फास्टेस्ट क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Surama Koshik. It's time for us to be ready in the test format style, because soon India and England will be playing the 5-match test series starting from January 25th. Now, ahead of the first test match, one big question is in front of all of us. The question is that who will lead the Indian bowling attack? Now, the other day we were talking about rank turners. We were talking about how Team India and England have included 4 spinners, and what role will spinners play in this test match. Now, to talk about all these things in more detail, I have with me Chetan Narula, Animesh Nath, and Soumya Kapoor, and one by one, I'll ask this to them. And obviously, your view also matters a lot to us. So you are also requested to send in your opinions. Who should lead the Indian bowling attack? Hello, gentlemen. Welcome to the live session. Chetan, there's a lot, the discussions are going about rank turners, and the discussions are there. What kind of Indian pitches should be there for this test series? Who should be there in the 11? Whether it should be spin heavy or we should have the pacers. What do you think? Well, first of all, अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि किस टाइप की पिचेस होंगी. From what I understand, teams आज और कल में ही वहाँ पे assemble हुई हैं, and from tomorrow onwards, there will be practice ahead of the first test. So we'll start getting an idea, what kind of pitches we have in store. But आप guess कर सकते हो कि किस टाइप की pitch होगी. It's not going to be Leeds United. Leeds United कह रहा हूँ मैं, football आजकल. Not going to be Leeds Headingley की pitch तो नहीं मिलने वाली ना आपको, कि आपने वो देखा और हल्का सा आपको ग्रे दिखाई दिया और आपने bowling कर ली. No, I don't think so. I think it's going to be something similar to what we saw in Nagpur and Delhi. Hopefully not Indore, and hopefully not Ahmedabad either. And I'm talking from the Australia Test Series. So look, Nagpur and Delhi pitches, there was nothing wrong in that. I think we saw some excellent cricket against the turning ball. Australia was in the hunt in both test matches, but India was just better in those conditions. ठीक है, batters के लिए थोड़ा सा tough था, but we saw excellent excellent century from Rohit Sharma, half centuries from some of the Aussie batsmen. I think Usman Khwaja ने बनाए थे run, Axar Patel ने run बनाए थे. Yeah, I'll be okay with that. Yes, test matches will finish in 3.5 days, but that's the norm now. Everywhere. South Africa में क्या हुआ था आप देख लो. So I'm expecting turners. I'm not expecting Indore type turners, rank turners, mad turners जहाँ पे हम भी bowling कराएं तो हमें भी 8 wicket मिल जाएं. So yeah, एक balance चाहिए होगा. So I'm still expecting turners. Or to answer your question, who will lead the Indian bowling attack? It's just one name. It's going to be Ravichandran, Ashwin who leads the bowling attack. Okay. Soumya, what do you think? Because you and I had a very long chat yesterday as well, when we were talking about the pitches, and day before when we were doing this live show around what should be the ideal playing 11, given they have included spinners, and who all should be there in India's bowling lineup. So what do you think? Whether it should be spin heavy or we should go with the pacers? What do you think? Okay, so जिस तरीके का नॉर्म चल रहा है, जिस तरीके की मैनेजमेंट की बातें होती हैं, आई गेस दे आर गोना गो फॉर दैट स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स. और उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो यार चारों स्पिनर को खिला दो, एक पेसर बहुत है आपके लिए, बट ऐसा होगा नहीं. सो आई गेस yes, Chetan bhai is totally right. I would love to see Ashwin, leading that pack of the spinners, and I will also have a Kuldeep Yadav, because वो मेरा एक थोड़ा सा लगाव है चाइना में spinners को लेकर के. So these are the two spinners, and apart from that, I would go for an Axar Patel personally, because जिस तरीके से उन्होंने recent past में test matches में perform करा है, I guess that suits him. The Indian conditions really suit him. So yeah, I would rather have an Axar Patel, but ऐसा I don't think so ऐसा होने वाला है. Because Jadeja is generally, and he is in this squad, he is ahead of Axar Patel. That's how the team management works, and that's how the things work here. But yes, if you talk about the 3 spinners, if I want to pick up 3 spinners, these 3 would be my choice.
Okay, so it would be Ashwin, Kuldeep, and Axar, right? Animesh, what do you think? मेरे हिसाब से भी यार अश्विन जितना एक्सपीरियंस है अटैक को लीड तो वही करेंगे स्पिनर्स में। पेस अटैक वैसे भी बुमराह जब होते हैं तो बुमराह ही लीड करते हैं, और वहाँ पे जिस तरह से स्पिन फ्रेंडली पिचेस की बात हो रही है और वही उम्मीद भी है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से दो ही पेसर्स की जगह बनेगी, वो होंगे बुमराह और सिराज। उसके अलावा अगर स्पिनर्स की बात करें तो बस कुलदीप डिजर्व करते हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले कुछ दिनों में। उसके अलावा आर अश्विन आपके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और कहीं ना कहीं जो टॉस अप होगा वो मेरे हिसाब से जडेजा और अक्षर के बीच में होगा। और जडेजा जिस तरह की ज़्यादा अच्छी बैटिंग जब देते हैं, मुझे लग रहा है जडेजा के साथ जाना चाहेंगे, और विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं इंडिया के लिए वो बहुत Hmm. लंबे अरसे से। तो कहीं न कहीं उन ये एक बात है, जब अक्षर पटेल और जडेजा में कहीं न कहीं कंपैरिज़न होता है, और जब एक टेस्ट फॉर्मेट की बात होती है, तो वहाँ पर जडेजा मेरे हिसाब से ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, और टीम के लिए कहीं न कहीं वो बैलेंस लेकर आते हैं। Okay, so you're talking about the toss-up between Jadeja and Axar. Chetan, what do you think? We have often talked about, how team always backs Ravindra Jadeja and they bring Jadeja in the 11. Do you think that this time around they should do some change? They should bring in Axar Patel in place of Jadeja? Do you have that kind of thought? No, I don't. I think ये thought process white ball cricket में हो तो बेहतर है. Test cricket Okay. में अभी भी अश्विन जडेजा जैसी pairing, especially in India, doesn't exist at the moment. There is no way. There is no way. मतलब दुनिया इधर की उधर होनी पड़ेगी कि अगर जडेजा फिट हैं और वो ना खेलें इस मैच में, दुनिया को इधर से उधर होना पड़ेगा. Some sort of war will start. कि टेस्ट मैच ही नहीं हो रहा है, मतलब उससे पहले मतलब जंग छिड़ जाएगी दो कंट्रीज के बीच कि ऐसे सिचुएशन हो जाएगी कि टेस्ट मैच नहीं हो सकता है बिफोर दिस हैपेंस. सो एज लॉन्ग एज बोथ अश्विन एंड जडेजा आर फिट, दे आर गोइंग टू स्टार्ट. अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं. क्या जडेजा पहले खेले हैं टेस्ट मैच? बिल्कुल खेले हैं. जडेजा और अक्षर खेले हैं टेस्ट मैच जडेजा के साथ. हाँ खेले हैं. अक्षर जडेजा अश्विन तीनों टेस्ट मैचेस खेले हैं, इकट्ठे खेले हैं. It becomes tough for somebody like Axar, and I think अगर वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात आ जाएगी, and I think कि अगर वो चाहेंगे कि हमारी बैटिंग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और 5 बॉलर खिलाना चाहेंगे, तो अक्षर पटेल की जगह बनेगी. मैं कुलदीप यादव को देखना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम एक नए स्पिनर को तैयार करें आगे के लिए, और कुलदीप ने वो करके दिखाया है कि वो मैच्योरिटी लेवल उनका बन चुका है. I think this is the right time for reintroducing Kuldeep Yadav to Test cricket. So that लेकिन means that, okay. Yeah, it'll depend on the playing combination कि आप क्या कर रहे हैं. मेरे राय में अगर आप स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बना रहे हैं और जिस तरीके से इंग्लैंड बैटिंग करेंगे, then you need to play an extra batter. और अश्विन सेकंड इनिंग्स में वैसे भी नई बॉल से गेंदबाजी करेंगे, पहली इनिंग्स में ही कराना शुरू कर दो. हो सकता है पहली इनिंग्स में ही करना शुरू कर दें, तो फिर आप 2 पेसर क्यों खिलाओगे? So I would play 1 pacer and 3 spinners, and I would play an extra batter depending on the pitch, क्योंकि the pitch is going to deteriorate. It's not going to get better for batting. तो अगर नागपुर स्टाइल की भी पिच है तो it's going to get worse for batting, right? So I would rather have an extra batter and a wicket keeper. मतलब I would play KL Rahul just as a batter, and then I would pick either Jurel or I would pick Shikhar Bharat, and then I would pick 3 spinners. So that is my thought process in this matchup. Okay, so I'll come to that KL Rahul and the wicket keeper thing a bit later. But Chetan, you mentioned here 3 names, the 3 spinners. You mentioned Ashwin, Kuldeep, and Jadeja. So what will be your bowling lineup? The other 2 pacers, will it be a clear choice, Bumrah and Siraj? I don't even want Jasprit Bumrah to play this Test series. I just want him to rest. Boss, rest करो आप जाओ. IPL के लिए रेस्ट करो और T20 वर्ल्ड कप के लिए रेस्ट करो. What is Bumrah going to do in the series? 8 ओवर एक टेस्ट मैच में डालने के लिए उनको एक पूरा टेस्ट मैच खिलाओगे आप? So, but the problem is he's the vice captain. So, are you leaving out your vice captain? Indian cricket has the history of leaving out vice captain, but I don't know. Yeah. See, look, in my books, if the pitch is going to be like anything other than अहमदाबाद की pitch, जो मैं रेफरेंस किस टाइप पे बात कर रहा हूँ, जो अहमदाबाद टेस्ट मैच में हमने पिच देखी थी, उसके अलावा अगर बाकी 3 टेस्ट मैच की तरह की पिच है तो आप एक पेसर ही खिलाओ बॉस. I would go in with a Mohammed Siraj,
रेस्ट जसप्रीत बुमराह, एक 8 ओवर के लिए मैं टेस्ट मैच नहीं खिलाऊंगा, फील्डिंग नहीं कराऊंगा, फील्डिंग करते करते को चोट लग गई तो सो देयर इज अ T20 वर्ल्ड कप कमिंग। अगर अगर आपका पेसर 8 ओवर डाल रहा है इस मैच में तो आप क्या करा रहे हो? सो forget that. I would play one pacer, 3 spinners. That is my bowling attack. If it is a spin friendly wicket, if it is a turning wicket from day one, that is what I'm going. And I'm totally expecting a turning wicket from day one. Kitna turn ye mujhe nahi malum, but I'm expecting a turning wicket from day one. So play an extra batter, play 3 spinners, and play 1 pacer. Okay, so you're also saying what Soumya mentioned a bit earlier, right? That it'll be good for Team India to go with only one pacer and the other spinners. Soumya, what do you think England must be thinking right now? Because obviously they are coming to India. They must be having their own plans as well. They have also included good number of spinners in their team. What should be their ideal spin bowling lineup, or what should be their bowling lineup for that matter? लेकर तो आया 5 स्पिनर, 4 रेगुलर प्लस एक जिसने आपके अगेंस्ट पंजा गोल दिया था, जो रूट. So I guess, I mean, jokes apart, they are looking forward. They are also looking forward towards a spinning track in these first 2 tests at least. Or I guess it's a good lineup. It's actually a very good lineup जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है. So I do agree with what Chetan bhai is saying that play an extra batter and just go in with the four bowlers, because अगर turning track मिलता है तो आपके 3 spinners आपका वो काम कर सकते हैं, Jadeja / Axar of course and Kuldeep and Ashwin. उसके साथ साथ but I would rather have instead of a Siraj, अगर 8 ही ओवर डालने या 10 ही ओवर डालने पूरे टेस्ट मैच में, तो I will rather give it to Mukesh Kumar. आप आओ थोड़ा सा करो and just be there around. सिराज को बोलूँ थोड़ा chill कर 2 मैच के लिए. That would be my pick, just for the rest bit of it. That's it, nothing else. So yeah, I mean, I would also like to go with an extra batter, but वो इंटरेस्टिंग होगा कि श्रीकर भरत ने भी 100 कर दिए, ध्रुव जुरेल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पिक होने वाला है उनके बीच में, apart from and play KL Rahul as a pure batter. That I agree. Okay, now when this whole topic has come into this live session once again, I'll go to Animesh and ask him, Animesh, this whole debate, or I should say that this round of who to go for a wicket keeper option, like we have KL Rahul in the team, we have Dhruv Jurel, we also have KS Bharat. So now a whole new debate has emerged where people are talking about, okay, we can go with KL Rahul as a pure batter and keep another wicket keeper, or we can keep KL Rahul as a wicket keeper batter. What is your thought? देखिए, जिस तरह की पिचेस की बात हो रही है इंडिया में, जिस तरह की टर्नर पिचेस रही हैं, वहाँ पर अगर आपकी स्पिन फ्रेंडली पिच होगी तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस विकेट कीपर की ज़रूरत होगी, जो विकेट कीपिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखे, ना कि केएल राहुल. ठीक है, ठीक ठाक विकेट कीपिंग उन्होंने करना शुरू कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट की जब बात आती है, आपको एक लंबे फॉर्मेट में बहुत लॉन्ग पीरियड तक विकेट कीपिंग करना होता है, और वहाँ पर आपको आपका एक्सपीरियंस शो करना होता है. वहाँ पर मेरी प्रेफरेंस हमेशा से केएस भरत ही रहेंगे. और अभी जो कहीं ना कहीं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थी कि उनकी फॉर्म नहीं थी, बैट से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, 100 आया, लेकिन उसके बिहाफ पे छोड़ भी दिया जाए, लेकिन केएस भरत एक क्रूशियल रोल मेरे हिसाब से इस सीरीज में अदा करेंगे एज एन विकेट कीपर, तो फर्स्ट चॉइस वही होनी चाहिए. और उसके अलावा उसके बाद अगर आप केएल राहुल को रखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी परफॉर्म कर रहे थे उसके, लेकिन अगर आप ध्रुव जुरेल को लेके आए तो अभी आप 3 टेस्ट मैच की स्क्वाड बाद में आएगी, हो सकता है कि आप उनको उस तरफ मौका दें, लेकिन मौका जरूर देना चाहिए, भले 1 टेस्ट मैच में या 2 टेस्ट मैच में, वो आप स्क्वाड में कुछ फेरबदल कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से पहली प्रेफरेंस केएस भरत होनी चाहिए एज एन विकेट कीपर. You're on mute, Suname. Okay. Yeah, Chetan, you started on this topic, KL Rahul, and the whole debate, Bharat versus Jurel versus KL Rahul, right? And some came up with the idea that KL Rahul should play as a pure batter, and the other two, either of the two, can be there in the 11 for the wicket keeping. What do you think? And then we'll discuss the scenarios, of course. Sorry, I didn't understand your question. Think what? My first part of the question is, what do you think? Do you second what Soumya mentioned? Soumya said that KL Rahul should play only as a batter, and for the wicket keeping thing, there should be a choice between Jurel or KS Bharat. What do you think in that case?
Yeah, I think I think अगर मैंने शुरुआत में ही बोल दिया ना आपको कि केएल राहुल should play as the only proper batter and they don't have batting options. तो आपको केएल राहुल को खिलाना ही पड़ेगा नंबर 5 या 6 पे. So नंबर 6 पे आई थिंक 5 पे तो श्रेयस अय्यर खेलेंगे. सो आप नंबर 6 पे केएल राहुल को खिलाइए. नंबर 7 पे आप जुरेल या श्रीकर भरत को खेल सकते हैं. 2 हफ्ते पहले जुरेल ने विकेट कीपिंग की थी भारत के आगे. पिछले हफ्ते भारत ने कीपिंग की है और उन्होंने रन भी बनाए इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट. 115 बनाए आई थिंक. एंड ही बैटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैच बचाया इंडिया के लिए, इंडिया ए के लिए. So I think that might just go in his favor. I still would want to see Dhruv Jurel to counter, the attacking quality that England are going to bring. कि लोअर ऑर्डर में अगर मुझे अटैक करने के लिए चाहिए, इंडिया ऋषभ पंत ने एक ऐसा ट्रेंड बना दिया था कि अगर आपके पास एक अटैकिंग विकेट कीपिंग बैट्समैन है तो वो बहुत अच्छी चीज रहती है. बट ऑब्वियसली ऋषभ पंत इज ऋषभ पंत एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर ध्रुव जुरैल टू हिम. बट आई एम जस्ट सेइंग कि बेसबॉल, वो लोग बेसबॉल खेलने वाले हैं. वो आंखें बंद करके कहना तो एक फ्रेज है. ऑब्वियसली आंखें बंद करके नहीं टांगेंगे, लेकिन बट यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि वो लोग टांगने वाले हैं. वो सिर्फ टांगने के लिए आ रहे हैं. उनको जब मौका मिलेगा, जब जैक क्रॉली 80 बॉलों पे 100 रन बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट टेल्स यू समथिंग. तो जो रूट उठा के रिवर्स मारने की कोशिश करेगा इन पिचेस पे, दैट टेल्स यू समथिंग. सो दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू बैट. उसके बाद वो लोग 5-0 हार के मॉरल विक्ट्री क्लेम करेंगे. दैट्स आल्सो गोइंग टू हैपन, सो ठीक है. उनको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए आप ध्रुव जुरैल को कीपिंग करा सकते हैं. आई वुड प्रेफर टू सी ध्रुव जुरैल. I think it's going to be Shrikar Bharat, especially if you're playing 3 spinners. If it's a rank turner, तो आपको थोड़ी सी safeguarding चाहिए. Shrikar Bharat, I thought kept well against spinners. It was when the weird था बहुत कि जब बॉल अच्छे बाउंस के साथ आ रही थी अहमदाबाद टेस्ट में, तब वो कैचेस ड्रॉप कर रहे थे, या उनको जब ओवर ले गए थे जहाँ पे मूवमेंट थी. जब स्पिनर्स के अगेंस्ट कीपिंग करनी थी, he was absolutely perfect, in the first 3 test matches. I was really impressed with his keeping. It was good keeping. So, and if you're playing an extra keeper, then KL Rahul should not be keeping wickets. He should be a keeper for overseas tests or on pitches in home where you need to play an extra bowler, whether it's a pacer or a spinner. Then when it's an Ahmedabad pitch, then you can ask KL Rahul to keep wickets. Simple as that. Okay. So, again, मैंने जैसा पहले अपने आंसर में कहा था, it should be KL Rahul. It should be either Bharat or Jurel. And it should be 3 spinners and 1 pacer. Okay. Now, this also leads us to the next question, Soumya. If we're going with a specialist wicket keeper, okay, let's say we are bringing in KS Bharat for keeping the wickets. Who should bat at number 5? Who will be our number 5 batter? Shreyas. You will bat Shreyas. Okay, so then how will you adjust in KL Rahul and Shreyas Iyer and let's say KS Bharat? No, Shreyas plays at 5. One will you drop? Shreyas plays at 5, KL at 6, and then you can have KS/Dhruv at 7, and then followed by your bowlers. 4 bowlers. If you're going with 4 bowlers, you're talking about 4 bowlers, right? Okay. Yes. I'm just looking towards different options, different scenarios, because in each and every scenario we'll have to tweak our 11, because we really want someone like Shreyas Iyer. If England team are all set to play their spinners, obviously we really need Shreyas Iyer. If we're going with the specialist wicket keeper, then we really need to think of KL Rahul's position also in the team. So in that scenario, what should be our thing to go ahead with? Well, as I said, Shreyas at 5, KL at 6, and then your wicketkeeper at 7. I would have a Dhruv Jurel in the first game. I would go in with Dhruv Jurel and give him the license, boss. With the bat, do whatever you want to. क्योंकि जिस तरीके का माइंडसेट है इंग्लैंड लेके आ रहा है ना, अगर टर्निंग ट्रैक्स मिल गए, रैंक टर्नर्स मिल गए, वो कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे उन पे. एंड इफ दे बैट फर्स्ट, दे आर गोना सफर अ कोलैप्स एटलीस्ट इन द फर्स्ट गेम. तो वो आप बेसिकली द थिंग हियर इज, आप पहले 6 बैट्समैन से एक्सपेक्ट करोगे कि टू पुट अप अ गुड टोटल मिला के 300 350 लगाओ, एंड उसके बाद जो बैटर्स करेंगे ना, उसके बाद के जो नंबर्स करेंगे वो सिर्फ ऐड ऑन होगा. आई एम नॉट पोस्ट अ बिग टोटल, बहुत बड़ा टोटल नहीं लगा पाएंगे वो. ये बहुत डिफरेंट इंग्लैंड है, ये बहुत डिफरेंट माइंडसेट है. ये स्टबन इंग्लैंड है बेसिकली. दिस इज स्टबन थॉट प्रोसेस.
तो सिर्फ एक फाइनल टचेस चाहिए होंगे नीचे के छठे नंबर के बैट्समैन के, 7वें नंबर के बैट्समैन से. सो first 6 are sorted. So you mean that it's going to be an easy assignment, comparatively an easy assignment for Team India? Not an easy assignment, but England is going to pose you some challenge. Of course, they have a lot of ability, but जिस mind setup से वो लोग आते हैं ना, वो बहुत stubborn है. उसे वो change नहीं करना चाहते और यहाँ इन conditions में वो नहीं चल सकता. That's it. Okay. So lastly, Chetan, what do you think? Can Indian spinners put down the baseball show? Is that smile an answer? Is that smile an answer? That's a point blank question. There's nothing more that I want to see them put down the baseball thing, because I get very irritated with this baseball thing. Yeah, it's true. Look, थोड़ा सा टफ है. अभी आऊंगा आपके सवाल पे हर्ष. थोड़ा सा टफ है क्योंकि देखो, if the ball is going to turn from first over, 9:30 बजे आप मैच शुरू कर रहे हो, 9:31 पे बॉल टर्न होना शुरू हो रही है, डस्ट निकलनी शुरू हो रही है. There is only one way to play. Yeah. There's only one way to play, and my fear is कि sometimes pitches पे control तो है नहीं किसी का, so you can just push the pitches a little far, and it just, I don't know, it just goes really weird. So look, my fear is कि अगर ball is turning square and England bat first and they get 250, मार के खेल के 200, 220, that's a match winning score. Okay. इंदौर टेस्ट मैच अगर आपको याद हो, 200 was a match winning score यार. India got out in the first innings for what, 100. मेरे ख्याल से 150 पहुंचे थे, कितना पहुंचे थे, जो भी था. And then Australia scored what, 200 something. That was a match winning score. You were behind that all the time. So it's not going to get better for batting, and you're not even trying to survive. You're trying to score runs. So it becomes a lottery. That is my fear for this series for India. एक क्वेश्चन मेरा है, बट चितन भाई, if you're going in with 9 batsmen, okay, 7 तक तो आपका कीपर बैट्समैन ही है, उसके बाद आपके पास अक्षर / जडेजा, उसके बाद अश्विन है, तो अगर 200-250 लग भी जाता है तो we can chase it down, like उसके आसपास तो मार सकते हैं. अब 9 बैट्समैन के साथ उतर रहे हो, अगर टर्निंग ट्रैक्स है भी, तो हम 9 बैटर्स के साथ खेलते ही आए हैं, मतलब 8 तक तो खेलते ही आए हैं ना. मतलब लास्ट ईयर हम लोग जडेजा तक, अक्षर, आपको दिल्ली टेस्ट मैच अक्षर ने बचा के दिया था. और वो 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा था. 8वें या 9वें पे बैटिंग कर रहा था. 9वें पे बैटिंग कर रहा था. So I don't know. He was batting at number 9. So number 9 saved you that test match, Delhi test match. Saved, not won. Saved. अगर पटेल की innings नहीं होती तो वो बॉर्डर का वास्ते ट्रॉफी 2-1 हो गई होती. अक्षर की वजह से ही रोहित शर्मा इंदौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में WTC की तैयारी के कमेंट्स दे पाए थे. So let's not 109 and 163 लो, 200 भी नहीं बनाए थे. Australia, so India was 109, so I think Australia scored some 200 plus in their first innings. I really don't remember, but I remember they 197, almost 200. So 197 was a winning score, na? So you bat first, you score 200, and that is a match-winning total on an indoor pitch. So India gave us in that last series 3 different type of pitches, और वो तीनों में तो डर तो है ही. अहमदाबाद वाली पिच आप दे दोगे तो फिर तो ये तोड़ के खेलेंगे. फिर तो कोई बात ही नहीं. फिर तो if they bat first, they'll score 450, 500, and then you'll be like, I still don't want to think they'll score 450, 500, but yeah. So exactly, it is a race against the magical ball, and the thing is कि the big thing is कि magical ball के लिए आपको magical spinner नहीं चाहिए ना. वहाँ पे तो शुभम स्पिन करके मैजिकल बॉल कर सकते हैं, मैं स्पिन कर सकता हूँ. इंदौर वाली पिच पे यू डोंट नीड एन अश्विन टू टेक विकेट्स. एनीबडी कैन टेक विकेट्स. ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर उठा के लाया जिसने एंड नेथन लायंस ए बेटर टॉड मर्फी ने विकेट्स उठाई थी. So that was the shock of the series for me. How is Nathan Lyon not the top wicket taker for Australia in this series? So it's crazy when you
जब आपका बैलेंस बिगड़ जाता है पिच का, so that's my only fear. Okay. उसके अलावा मुझे मतलब that's the only thing about baseball I'm not understanding. What happens when India gets bowled out for 109 on an indoor-like pitch? That is my only fear about making these rank tournaments. Okay. Well, so far we talked about who will lead the Indian bowling attack, and there was a clear answer from our panelists. Ashwin was there. So Ashwin should lead Indian bowling attack in the 5-match test series that will be coming up from 25th of January. We also talked about the wicket keepers. We talked about this whole debate of No, I want to talk KL about my versus... comment. No, we will be talking, Chetan. We will be talking. I'll be taking all the comments one by one. But we talked about KL versus Jurel versus Bharat. So we talked about two major things, and obviously the baseball, because that's something that we've been talking about in a number of shows. So request everyone to put up your questions on these lines to our panelists. We'll be happy to take them one by one. And with that, we'll begin our rapid fire round. Would request you to please make it rapid, as we'll be aiming to pick as many questions as possible. First one is for Chetan from Harsh Purohit. He's asking, how do you rate this series? Because I feel this will be a really close one. Yeah, I've said this before. It's either going to be 5-0 to India with England winning the moral trophy, or it's going to be... Soumya has that reply. Soumya's expressions are a reply to you. It's going to be 2 going into Dharamshala, and then we'll see what happens in Dharamshala, something like that. So या तो वो होगा या वो होगा. There is no in between. Achha, so you're saying 5-0 or 2-2 and then decided in Dharamshala. Okay. मुझको एक पूछिए, मॉरल विक्ट्री, मॉरल ट्रॉफी कैसे मिलेगी अगर 5-0 हार के जाएंगे तो? चेतन भाई 2-2 में भी तो उन्होंने ले ली ना. 2-2 में ले ली, ठीक है. 5-0 ऐसे ठीक है. आप घर में जीत गए, नहीं जीते ना. 2 टेस्ट मैच ही तो किए, मतलब समझ नहीं आया. सीरीज ड्रॉ की है, मॉरल विक्ट्री कैसे हो गई? नहीं, यहाँ तो क्लीन स्वीप कहते हैं. 5-0 क्लीन स्वीप के बाद मॉरल... यू आर अंडर एस्टिमेटिंग इंग्लिश मीडिया. अनिमेश से पूछ लेते हैं. अनिमेश, अरे यार, साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा के पिच वाले कमेंट पे सबसे ज्यादा कौन रोया था? ओके, चलिए अनिमेश से पूछ लेते हैं. अनिमेश, क्या लगता है? मैं चेतन से सहमत हूँ कि 5-0 होगा, क्योंकि वो वही माइंडसेट रहेगा. वो लगातार बैकलैश झेलने के बाद, जैसे कोई भी टीम होती है, कोई भी प्लेयर होता है, अगर उसको इतना बैकलैश झेलना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें उसको झेलनी पड़ती है, जिस तरह का ओडीआई वर्ल्ड कप कैंपेन उनका गया था, उसके बाद वो चीज़ें चेंज करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इंग्लैंड उसी तरीके से बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं कि हम करेंगे तो यही करेंगे, इससे कुछ निकलता है तो ठीक है ना. तो ये एक स्मार्ट क्रिकेट नहीं है मेरे हिसाब से. आप किसी एक टर्म को प्रमोट कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से वही होने वाला. और इंडियन पिचेस पे उनको फिर से वही देखने को मिलेगा जो उनके साथ ओडीआई वर्ल्ड कप कैंपेन में हुआ था. Okay, so 5-0 is that big guess कि ये होगा इस सीरीज में. What you all think? Comment quickly and we'll take up your comments. Till then, let's move to the next one. Okay, this illogical mindset will hurt us more. We'll be missing the services of Rahane and Pujara. Soumya, ये बहुत बार ये सवाल आता है कि रहाणे और पुजारा को हम मिस करेंगे, उन्हें क्यों नहीं खिला रहे हैं, वो क्यों नहीं है टेस्ट स्क्वाड में. क्या आंसर है आपका? विद पुजारा आई स्टिल फील अगर आपको ट्रांजिशन के लिए जाना था तो आप एक को रख सकते थे. बट अगेन, यू नो, इफ यू लुक एट द रणजी ट्रॉफी, रहाणे हैज अ couple of zeros, first ball zeros, you know, on the trot, and then he scored some 16 in the second innings in the recent one. So ठीक है, रहाणे का फॉर्म नहीं है. पुजारा के लिए आप फिर भी बात कर सकते हो, लेकिन आप बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि शुभमन गिल बहुत खराब खेल रहे हैं. यू नो, हैड शुभमन गिल बी प्लेइंग गुड, उनका साउथ अफ्रीका का टूर अच्छा लगता, आप बात नहीं करते नंबर 3 पे. बट या आई डू फील दैट अगर ट्रांजिशन में जाना था तो आप किसी एक को वहां रख सकते थे, किसी एक सीनियर बैटर को. दोनों में से अगर कोई होता तो शायद पुजारा होता. रहाणे का फॉर्म नहीं है. With all due respect, रहाणे का फॉर्म नहीं. Well, actually, this is the whole discourse on other platforms as well, the social media platforms, what fans are saying, because on the basis of the domestic performances and other performances that people have seen, people are saying that Pujara might have got a chance in the test series, but it seems that Team India has already put curtains to that whole discussion. Let's move to the next one. This one's for Chetan from KK. He's asking you, Chetan, that don't you think KL is taking the place of the player in 11? If he's allotted for wicketkeeper role, then he must do so. It feels like someone is making a place for him.
नहीं देखिए, आई थिंक यू बीइंग अ लिटिल हार्श. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह रहे हो कि ही इज टेकिंग द प्लेस ऑफ प्लेयर इन 11. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर स्क्वाड देखो तो इंडिया हैज नॉट पिक्ड एन एक्स्ट्रा बैटर. आप अगर स्क्वाड को देखो, देयर इज नो एक्स्ट्रा बैटर. या तो आप राहुल को खिला रहे हो एज अ कीपर और 5 गेंदबाज खिला रहे हो, या फिर आप एक्स्ट्रा कीपर खिला रहे हो जो कि श्रीकर भरत या ध्रुव जुरैल है. ठीक है, अब आप भरत और जुरैल को खिला के केएल राहुल को विकेट कीपिंग कराओगे तो दैट इज स्टुपिडिटी इन माय ओपिनियन. Yeah. So can we have the comment please? So I don't think he's taking place of anybody in the 11, and I think आप अगर मतलब आप देखो साउथ अफ्रीका में जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, that was really good performance in terms in very tough conditions. So एक recency bias बहुत है इंडियन क्रिकेट में. हम फैंस के, मीडिया के कमेंट्स में रहता है, टीम मैनेजमेंट के दिमाग में भी रहता है. एंड केएल राहुल इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सीनियर प्लेयर. So senior player when scores 100 like that, he scored in South Africa, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो. So he is going to take that place as a batter. Okay, ये मेरा ओपिनियन है कि he should play only as a batter and not keep wickets. क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपको 4 गेंदबाज खिलाने चाहिए जिसमें से 3 स्पिनर होने चाहिए. That is my opinion. Whether or not Rohit Sharma and Rahul Dravid say that, तो Tuesday Wednesday में पता चल ही जाएगा. ठीक है, बट आपका फर्स्ट का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आई डोंट थिंक ही इज टेकिंग प्लेस ऑफ एनीबडी इन 11. अपनी उनकी जगह एज अ बैटर बनती है जो उन्होंने 100 लगाया. एंड दैट इज माय ओपिनियन दैट देयर, क्योंकि हमें 5 गेंदबाज की जरूरत नहीं है. अगर आप 3 स्पिनर खिला रहे हो, आपको अगर रैंक टर्नर मिलता है, आपको एक एक्स्ट्रा बैटर जरूर चाहिए. जो कोलैप्सेस हमने देखे पिछले साल, वो एक सेफ्टी नेट हो जाता है ऐसी पिचेस पे जहां पहली बॉल से ही घूम रही है बॉल. एंड ऑल्सो बिकॉज व्हाट द ऑपोजिशन इज डूइंग, इस बात पे नजर रखनी जरूरी है कि ऑपोजिशन क्या कर रहा है. ठीक है, आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने केवल 4 बॉलर खिलाए थे पूरी सीरीज में. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन दे प्लेड 3 स्पिनर्स. ऑस्ट्रेलिया प्लेड 3 स्पिनर्स बिफोर इंडिया डिड, मतलब विद ओनली 1 पेसर. आई थिंक दिल्ली टेस्ट मैच था जिसमें सिर्फ मिचेल स्टार्क और 3 पेसर खेले थे. नहीं, दिल्ली नहीं था. दिल्ली में ही वाज यूज्ड इन देयर. नहीं, कैन नॉट प्रोड्यूसर प्लीज चेक. आई थिंक दिल्ली था जिसमें नहीं, दिल्ली में पैट कमिंस तो खेले थे. तो इट वाज ईदर पैट कमिंस एंड 3 स्पिनर्स. आई थिंक इट वाज पैट कमिंस एंड 3 स्पिनर्स, और इंदौर में था स्टार्क एंड 3 स्पिनर्स, समथिंग लाइक दैट हैपेंड. जहां पे आपके आई रिमेंबर बिकॉज़ आई वाज देयर इन द प्रैक्टिस सेशन. सो उसकी स्टार्क का था कि डाइसी था तभी कि ही वोंट प्ले द गेम, इसलिए. हाँ, नहीं तो फिर इट वाज पैट कमिंस एंड 3 स्पिनर्स ना, क्योंकि पैट कमिंस तो खेले थे. मैंने तो टेस्ट मैच कवर किया था. So it's been so, क्योंकि इतना ज्यादा क्रिकेट हो गया है उसके बाद. तो I think it was Pat Cummins and 3 spinners. Pat Cummins and 3 spinners, yeah. It was Pat Cummins and 3 spinners. सेकंड टेस्ट में ही इंडिया से पहले उन्होंने ये कॉम्बिनेशन बना दिया था. 7 बल्लेबाज खिला रहे थे वो. हालांकि एलेक्स कैरी नंबर 7 पे क्या कर रहे थे वो, Quinn Mann, Nathan Lyon and Todd Murphy. Exactly. So Travis Head भी चौथा स्पिनर. हाँ, मतलब वो तो उनके पास पार्ट था. टाइम बॉलर. वही हमें इंग्लैंड का भी देखते हुए मिलेगा. जो रूट इज नॉट प्लेइंग द सीरीज एज अ बैटर यार, ही इज प्लेइंग द सीरीज एज एन ऑलराउंडर. सो यू नीड मोर एंड मोर बैटर्स टू काउंटर द ओपोनेंट्स कि वो एक ही तरीके से खेलेंगे. अगर वो एक्स्ट्रा 50 रन भी बना देते हैं इन टर्निंग पिचेस पे, आपको उसको काउंटर करने के लिए एक प्योर बैटर चाहिए. क्योंकि वहां पे अगर वो काउंटी क्रिकेट के सेकंड ग्रेड से स्पिनर उठा के ला रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग द बॉल टू टर्न लाइक क्रेजी, जहां पे कोई भी टर्न करा लेगा. So that is where I'm coming from. Okay. Shubham saying that the Indian spinners don't take wickets on flat pitches, bowling first. Chennai 21, Ahmedabad 23. India prepares square turners to take toss out of the match. Animesh, what's your take on this one? मेरे हिसाब से देखिए, अब ये तो प्रॉब्लम है ही है. अब इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है. फ्लैट पिचेस पे पहले बात जो चेतन भाई बात कर रहे थे, उसका ही सॉल्यूशन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अलग होगा. इतने अटैकिंग मोड में 3 स्पिनर्स और सिर्फ एक पेसर के साथ टीम इंडिया जाएगी, उससे भी मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा. क्योंकि इस तरह का फैसला अगर टीम इंडिया का मैनेजमेंट या रोहित शर्मा या कोच राहुल द्रविड़ खुद ले पाएंगे, ये बड़ा सवाल है कि वो सिर्फ 4 बॉलर्स के साथ उतरते हैं. कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपको यहाँ पे अक्षर और जडेजा दोनों को देखने को मिल जाए, और शुभमन या फिर कहीं ना कहीं केएल राहुल या किसी ना किसी को एक को बैठा देंगे वो,
कि आपको एक बैटिंग डेप्थ भी मिल जाएगी और आपको बॉलिंग में भी ऑप्शन मिल जाएगा, और ये माइंडसेट उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाकर दिखा चुके हैं वो। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो चीज़ें चेंज करती हैं, और कहीं ना कहीं इतने अटैकिंग मोड में टीम इंडिया का मैनेजमेंट नहीं जाना चाहेगा। दूसरी चीज़ जो पिचेस की बात हो रही है, वो हमने देख लिया कि क्या हासिल हुआ है टीम इंडिया को, और पिचेस को लेकर जो चीज़ें चलती रहती हैं उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, आपको अपना गेम चेंज करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उसका नतीजा भुगतते हुए देख चुके हैं टीम इंडिया को। इंदौर टेस्ट का बार बार अभी हम इस पूरे लाइव सेशन में हम बात कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो बॉलर्स में नहीं, जो कमेंट था कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स बॉलर्स में नहीं, कहीं ना कहीं बैटर्स में है कि उनको उन पिचेस को लेकर अपने गेम में जो चेंजेस लाने चाहिए उसको लाने में वो नाकाम रहते हैं, और फिर टेल एंडर्स को ही थोड़ा बहुत गेम खींचना पड़ता है, और मिडिल ऑर्डर फेल होता है या फिर कभी टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है। आपको WTC फाइनल से लेके जो कहीं हम ओवरसीज खेल रहे थे तब भी, और जब इंडियन पिचेस पे खेलते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहाँ पे आपको बैटर्स को वो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप 109 पे ऑल आउट हो रहे हैं उसी पिच पे। ठीक है, वो पिच बदलती है, लेकिन उसके हिसाब से आपको गेम में भी अपने चेंजेस लाने चाहिए। तो सारा ठीकरा बॉलर पे फोड़ देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट अनिमेश। मुझे याद है 1-2 दिन पहले जब हम ऐसे ही लाइव शो कर रहे थे तो सौम्या और हमारी काफ़ी इस पर बात हुई थी। चेतन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैटर्स परफॉर्मेंसेस? बिकॉज़ अक्सर क्या होता है कि हम बॉलर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते हैं एंड से कि आवर बॉलर्स weren't prepared. But of late, we see different formats and different tournaments. We've seen that bowlers have been up to the mark or they have performed really well. But when it comes to the batters, India's top order has failed terribly in few of the matches and few of the formats. उसके बाद पॉइंट वही आता है कि आप बहुत ज्यादा टेल एंडर्स पर बिलीव करते हो कि हाँ वो आपको जिता कर देंगे, एंड यू राइटली मेंशन एट द स्टार्ट ऑफ दिस लाइव सेशन कि अक्षर पटेल ने वो जो मैच था वो सेव कराया था, वो जीता नहीं था हमने। So that's another thing. What do you think? What should be the change in India's batting strategy, or what should be, something different? Do you think there should be something different in India's batting order as well? Yeah, I think the batting order is pretty much set. Okay. KL Rahul at 6, and if they play an additional keeper, then 7. Otherwise, Jadeja at 7. I think even if they play Shrikar Bharat, I think Jadeja will bat at 7 and Bharat at 8. I think so. But it's अगर कुछ चेंज करना है बैटिंग स्ट्रेटजी में तो बस यही चेंज है कि बैट बेटर, सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स टेक जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे, लेट्स उनकी बात करते हैं। जो कमेंट दिया था उन्होंने कि आप चेन्नई 2021 में देखो क्या हुआ था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग किया, जो रूट ने डबल 100 मार दिया। उसके बाद इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही थी? ठीक है, हमें रैंक टर्नर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहली बात कि अभी तक जितनी भी मेजर सीरीज हुई हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक बीच में एक आध सीरीज हुई, आई एम रियली फॉरगेटिंग, इतना ज्यादा क्रिकेट हो गया है। स्पेशली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें 21 में और 23 में, उसकी हमें जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमें WTC के पॉइंट्स चाहिए थे। We needed to qualify for the final of the WTC. So we needed those points, and when you're playing Ashwin and Jadeja, up to 90% those points are guaranteed on those pitches. यही इसी स्ट्रैटेजी के साथ गए ना। इंदौर में जो हुआ सो हुआ, लेकिन पहले 2 टेस्ट मैच जीतने की बदौलत और चौथा टेस्ट ड्रॉ करने की बदौलत इंडिया पहुंच गई थी ना फाइनल में। Yeah. So we needed those points. Now the big difference is we still need points, but it's not a do or die stage. ठीक है, it's not a do or die stage in this series. हालांकि मेरे हिसाब से है, क्योंकि आपको अगले साल ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद 5 टेस्ट मैच के बाद आपको, आई थिंक दे प्लेइंग श्रीलंका एट होम, बट इट्स नॉट, मतलब श्रीलंका को हरा के आप नहीं पहुंच पाओगे WTC फाइनल में। सो फॉर मी दिस इज अ डू और डाई सीरीज। WTC के हिसाब से आप अभी ही बढ़त बना लो। सो माय पॉइंट इज, द मेन इशू इज कि आपको क्यों रैंक टर्नर्स बनाने पड़े। एक तो WTC की वजह से, दूसरे आपको रैंक टर्नर्स इसलिए बनाने पड़े क्योंकि आपके बैट्समैन फेल हो रहे थे। अगर 21 के फर्स्ट टेस्ट में बैटर्स फेल नहीं होते तो आपको अगले मैच से रैंक टर्नर्स बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको सीरीज जीतनी थी ना। आपको सीरीज जीतनी थी। सो यू नीडेड टू चेंज समथिंग देयर। आपके बैटर्स रन नहीं बना रहे थे। इस बार भारत ने अब चेंज कर दिया है। यशस्वी जायसवाल आ गए हैं, अय्यर आ गए हैं, राहुल को मिडिल ऑर्डर रोल दे दिया गया है। सो यू चेंज्ड थिंग्स अराउंड, यू मूव्ड ऑन, यू गॉट अ न्यू ओपनर। सॉरी, शुभमन गिल नंबर 3 पर आ गए हैं, यू गॉट अ न्यू नंबर 3, यू गॉट अ न्यू नंबर 5,
and you have changed the role of your number 6, so this time it should result in a better batting performance. And when I say a better batting performance, I mean कि अगर आप चेन्नई या अहमदाबाद जैसी पिचेस पे सेकंड इनिंग्स में भी आपको बैटिंग, आप टॉस हार के आपको पहले फील्डिंग मिले, तो पहले तो आपकी बॉलिंग उनको रिस्ट्रिक्ट करे, ना कि 600 रन बनाने का मौका दे, और फिर उसके बाद आपके बैटर्स शुड बी एबल टू बैट. आप 2018 की 2016-17 की सीरीज उठा के देखो, जब एलिस्टर लेकर आए थे, जब विराट कोहली कप्तान थे, इंग्लैंड won 4 tosses and batted first in 4 test matches, I think, or 5 test matches, something like that. But India won 4-0 because your batters were और वो उन पिचेस में रैंक टर्नर नहीं था, सारे मैच चौथे या पांचवें दिन पर गए थे. I covered that entire series. उस सीरीज में आपके बल्लेबाज सेकंड बैटिंग करके भी रन बना रहे थे. सेकंड और थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे बैटिंग करके रन बना रहे थे. चेन्नई में जो हमने 700 रन बनाए, 100 लगा वहां पे, केएल राहुल ने डबल, और आई थिंक ही गॉट 199 सेकंड इन दैट मैच. सेकंड बैटिंग करके मुंबई में विराट कोहली ने इतना जबरदस्त डबल टर्न लगाया था. वी वर बैटिंग सेकंड इन दैट मैच. So you need to bat better. India has even on pitches like Chennai and Ahmedabad, और अहमदाबाद में भी विराट कोहली ने बचाया हमें. Although that was a good pitch to regain form, and thank God he regained his form because it was long overdue. But my point is, Ahmedabad में भी हमारा top order failed. So our batters need to perform better. और अब आपने अपने बल्लेबाज चेंज किए हैं, तो आपको वो बदलाव दिखना चाहिए. You should not much needed on these pitches anymore. You have a Rohit Sharma, you have a Jaiswal, you have a Shubman Gill, you have a Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul. आप मुझे कह रहे हो कि ये चेन्नई जैसी पिच पे, चेन्नई 21 वाली पिच पे ये बैटिंग करेंगे सेकंड, they can't score 400 runs? Are you telling me that? If that is the case, तो फिर तो भैया दुकान बंद करो, घर बैठो. Exactly. Yeah. So, you know, because they have made because they have made some visible changes, we really want to see some visible results as well. And especially, we'll get to see all of that from the first test only. That'll start from 25th of January in Hyderabad. Well, I just have 5 more minutes, so we'll quickly take the next question and the others. Okay, this one's for Chetan. Shubham Garg saying, in that series, Ashwin Jadeja got England out on 300, 350 first inning, not 500, 600. Nowadays, Ashwin Jadeja don't take wickets on flat pitches on first day. He's talking about that this duo, they don't take wickets on first day. So I think he's just it's talking very easy on the to point blame that you Ashwin Jadeja for that. I don't know if you remember the pitches from that series. They were not flat wickets. You know, there was always something in the wickets. There was slow turn in the wicket. There was enough turn in the wickets in 2018 की series में कि आपको हल्का सा turn मिल रहा था. They were your regular Indian wickets even on day one. Okay, it was not as if कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है. जो पिछले साल अहमदाबाद में देखने को मिली है wicket, that was an absolute shocker of a wicket. और चेन्नई 21 की मैं आपको बता दूं, SG balls के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था वहाँ पे. जो उस बैच की SG balls थी, they were not up to the mark. Okay. They were not examined, or something happened about the SG balls that were used in that particular test match. So look, एक चीज का और आपको ध्यान रखना होगा कि इंग्लैंड जो 2016-17 में आई थी, that was a really bad batting team. Yes. That was a really bad batting team. And over the years, में बहुत सारे अपने पार्टनर्स चेंज करे थे, ओपनिंग पार्टनर्स. That was the same series, right? पहले 2 टेस्ट मैचेस में वो यंगस्टर था, forgetting Hasib Hamid, I think his name was. Hasib Hamid. And then he got injured in the Mohali test match, and then they kept on changing. So something. And their batting lineup was not settled. They did not have good spinners and all. So it was, and India was on a high at that time. और आप
ठीक है, your comment is a little valid. Ashwin, Jadeja were at their peak at that moment. Right now, Ashwin, Jadeja is probably past that peak a bit. I don't know. I can say so. You're Can talking say so. about 7 years ago, you know, matured spinners, the peak of your power. India's batting, यार, Virat Kohli was a 2016-17 में that double 100 he scored in Wankhede, मुझे भूलता नहीं है. एक उनकी Adelaide में नॉक सेकंड इनिंग्स की और एक वो डबल 100 वानखेड़े वाला, वो मुझे नहीं भूलता है. That was क्लास. He was a different batter तब. ओके, और आपके पास रोहित शर्मा ही नहीं थे तब तक टॉप ऑर्डर में, आपके टेस्ट टीम में ही नहीं थे. So India had a completely different lineup. करुण नायर, उस आप सोच के देखो, इंडिया वाज ऑन सच अ हाई कि करुण नायर जो आज की डेट में क्रिकेट के लिए तरस रहे हैं, उस टाइम पे वोट उन्होंने उस इंग्लैंड टीम को 100 मार दिया यार. So you know, it was a very different England team, and England team that came in 2018, sorry 21 में जो इंग्लैंड टीम आई थी, that was a very very different England team. They were much more settled. They were much improved in terms of their batting. Joe Root had become this batter जो मतलब हर इनिंग में रन बना रहे थे. और वो श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच खेल कर आए. They were already in the groove. So you see, you can't just blame it on Ashwin, Jadeja. That's my point. No, that's right. That's right. We just can't pick 2 of the bowlers and put the blame on them. Yeah. ऐसा नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में कभी विकेट्स नहीं लिए, आजकल नहीं ले रहे. देयर मस्ट बी सम मिटिगेटिंग फैक्टर्स यार. इट्स नॉट जस्ट वो लेना नहीं चाहते या मतलब ठीक है. आई थिंक द फर्स्ट इनिंग पिचेस, व्हेन यू मेक फ्लैट पिचेस, फर्स्ट इनिंग्स इन इंडिया हैज बिकम रियली टफ टू बोल ऑन. एक चीज आप ये भी सोचो, these pitches are so heavily used throughout the year. हमारे क्रिकेटर 11 महीने खेल रहे हैं, पिचेस तो 13 महीने यूज हो रही हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट इतना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. So try and understand कि pitches की over rolling, so nature of pitches, nature of square changes over time. That has also changed. आप उनको heavy use कर रहे हो, तो there is a, that is why जब आप flat track बना रहे हो तो वो इतना ज़्यादा flat बन रहा है कि the bowlers have nothing in it. So exactly. let's be very let's not be harsh. So yeah. Okay, so let's move to the next one. Athar Joshi is saying that why we don't follow the footprint of the Australian management, the way they make stadiums and all the facilities there and all of that, the special quality. Soumya, what do you think? एक तो यार ये जो दूसरे बोर्ड्स को लेके जो एक एग्जांपल सेट करते रहते हैं ना, ओके, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फैंस, ये थोड़ा सा इससे बाहर आओ यार. द सिचुएशन ऑफ दैट बोर्ड एंड इंडियन बोर्ड बहुत डिफरेंट है, ठीक है. और जिस माइंडसेट, ठीक है, माइंडसेट की एक बात होती है टीम मैनेजमेंट की, आप उस तरीके से ट्रैक क्रिएट करते, बट ये दिस इज नॉट इवन अ वैलिड पॉइंट. आप इसी का It's not a fair comparison. कंपैरिजन नहीं है. Sorry, it's not a fair comparison. I don't really draw this kind of a comparison. Okay, let's move to the next one. Ujjwal Morris saying WTC has ruined Test cricket. Teams are only playing for points. Pitches have been horrible everywhere, even in Australia. WTC is not a fair assessment. It should be scrapped. Okay, so WTC should be scrapped. Whether it should be scrapped or not, Animesh? नहीं, बिल्कुल नहीं. और एक अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, पॉइंट्स मिल रहे हैं, लोगों में कंपटीशन देखने को मिल रहा है. टेस्ट को कहीं ना कहीं जो बार बार ये दिक्कत देखने को मिल रही थी, जो क्वेश्चन बार बार उठ रहा था कि टेस्ट क्रिकेट खत्म होता जा रहा है, ओडीआई फॉर्मेट खत्म होता जा रहा है, WTC आने की वजह से कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जो कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है. बायलैटरल सीरीज से हट के आपको एक गोल मिलता है कि आप 2 साल उसके लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं. तो जैसे एक ओडीआई वर्ल्ड कप है, आपको कहीं ना कहीं गोल अचीव करना है, ठीक है, आप जितनी भी बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, लेकिन आपके पास एक गोल है ना अचीव करने के लिए. WTC मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं एक टेस्ट क्रिकेट को जो कहीं ना कहीं जिंदा रखने की, उसमें जो एक फ्लेवर फिर से लाने की कोशिश की गई है, और वो बहुत जरूरी था टेस्ट क्रिकेट के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए. आप अगर ओडीआई में से वर्ल्ड कप हटा दीजिए तो फिर क्या ओडीआई क्रिकेट को आप देखना चाहेंगे लगातार? आप 4 साल इंतजार करते हैं ना ओडीआई वर्ल्ड कप देखने का, लेकिन वही WTC फाइनल सेम चीज है मेरे हिसाब से. ठीक है, टीमें कोशिश करती हैं कि उनको पॉइंट्स पर ज्यादा उनका ध्यान जाता है, लेकिन कम से कम वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ ध्यान तो दे रही हैं. अब आपको 3 टीमें देखने को तो मिल रही हैं हर क्रिकेट बोर्ड में, 3 नए कप्तान भी तो देखने को मिल रहे हैं. हर टीम फिर से उसी T20 क्रिकेट की तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा अपना डिपेंडेंसी तो नहीं दिखा रही. तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो चेंजेस आए हैं आईसीसी ने, WTC लेके आया, तो मेरे हिसाब से वो अच्छी चीज है टेस्ट क्रिकेट के लिए.
You are absolutely right, Animesh, because with WTC, a lot has changed in the Test cricket format as well. A lot of people are now getting interested. Obviously, cricket lovers do enjoy Test cricket, but when WTC kicks in, people do love to enjoy that as well. Okay, so we'll just take two last questions and would request our producer to shoot the question. Okay, KK is saying Australia selected 13 players for their match this summer. Why the selectors of our team can't be precise for selecting team? Those who don't get a chance in the 11, they also miss Ranji. Soumya, what's her take on this one? 15 या 16 के तो स्क्वाड बनाया है अगर एक्स्ट्रा और आप तो रखोगे ना प्लेयर्स को ये आई मीन रणजी ट्रॉफी कोई मिस नहीं कर रहा है रणजी ट्रॉफी लोग अपनी मर्जी से अनअवेलेबल हो रहे हैं श्रेयस अय्यर वाज प्लेइंग रणजी ट्रॉफी बिफोर जो ये जो लास्ट राउंड का गेम हुआ है वो खेल रहे थे आई हैव ध्रुव जुरेल केएस भरत इंडिया ए के साथ हैं तो दे आर गेटिंग देयर गेम टाइम और आप किन किन प्लेयर्स की बात कर रहे हो नहीं Okay. KK, we would love to know your answer as well because सौम्या ने जैसा बताया it's true कि श्रेयस अय्यर खेल रहे थे क्योंकि अब वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं तो obviously he wanted that time. He himself said कि मुझे वो टाइम चाहिए भी था थोड़ा सा खेलने के लिए. So that's happening parallelly. Rahul कह रहे if you give flat pitches there will be high chances of no result. England will make 600 India will also make 600 in flat pitches. Chetan, Yeah, don't be so sure. 600 तो बहुत ज्यादा हो गया Don't be so 600 sure. तो- नहीं, these are not Pakistan pitches की 5 हाईवे बना दिया तो हाईवे बना दिया. In India pitches deteriorate. yes true ठीक है? In India pitches deteriorate. Unless and until you're creating a highway specifically और आपको लगता है कि ऐसा होगा नहीं लगता. और इंडिया में पिचेस देखो इंडिया में क्या होता है पिचेस के टर्न 2 या 3 तरीके के होते हैं. देयर इज अ स्लो टर्न, देयर इज अ मीडियम टर्न, देयर इज अ फास्ट टर्न. बहुत सारे स्पिनर्स जो होते हैं मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट मैच, एवरी डे ऑफ द टेस्ट मैच आप देखोगे ना, कभी ध्यान देना, कभी मैच पे अगर आप देखने जाओगे या टीवी पे देखोगे, जो भी टॉप क्लास स्पिनर्स होंगे, अश्विन, जडेजा या पुराने टाइम में विजिटिंग स्पिनर्स जो भी होते हैं, वो साइड पिचेस पे जरूर बॉलिंग करके देखते हैं क्योंकि वो स्क्वायर की स्पीड नाप रहे होते हैं अपनी बॉलिंग कर करके और फिर जब वो मैच में बॉलिंग करते हैं तब भी वो कॉन्स्टेंटली स्पीड नाप रहे होते हैं. हर बॉल पे स्पीड नापी वो अपने मेंटली नाप रहे होते हैं पिच की स्पीड. इंडिया में यू डोंट गेट पिचेस लाइक पाकिस्तान की आपने 600 बना दिया तो दूसरी टीम भी 600 बनाएगी और वहां पे लोग चाय नाश्ता करके सो रहे हैं स्टेडियम के अंदर. ऐसा नहीं होता है इंडिया में. पिचेस डिटीरियरेट इन इंडिया. एक सेशन में 4 विकेटें निकल गई तो मैच वहीं पलट जाता है, कुछ पता नहीं चलता है इंडिया में. सो पिचेस इन इंडिया डू डिटीरियरेट, दे आर नॉट कंसिस्टेंटली कि 600 हैं. वो बहुत रेयर केस होगा आपको इतनी फ्लैट पिच मिल जाएगी और अगले दिन एसोसिएशन के ऊपर कोई ना कोई कुछ बोल देगा यार, स्टेट एसोसिएशन पे जो पिच क्यूरेटर वो पिच बनाएगा वो उसका करियर खत्म वहीं पे. इंडिया में ऐसा नहीं होता. Okay. Well, I'll take quick last 2 questions because this one's about the topic where we began this live session. So Karan Sen's asking who will be the first wicketkeeper choice for first test. Quick answers. Animesh? मेरे हिसाब से केएस भरत ही होंगे क्योंकि वो एक्सपर्टीज जो उनके पास है कहीं ना कहीं वही होंगे. और बाकी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बैकअप में राहुल या ध्रुव जुरैल, अगर ध्रुव जुरैल होते हैं तो फिर मेरे हिसाब से राहुल उनके साथ होंगे, पर फर्स्ट चॉइस मेरे हिसाब से केएस भरत ही होंगे. केएस भरत. सौम्या? I want to see a Dhruv Jurel straight in. Dhruv Jurel. Chetan? It will be KS Bharat, but I want to see Dhruv Jurel. Exactly. Okay, so our panelists want to say Dhruv Jurel. What do you want to see Karan Seni in the first test match? Do let us know. And the last question for the day, it's exclusively for Chetan. Chetan, you would like to answer, Sunny? Yes, I'm doing commentary for this test series. You can find me on Talk Sports Radio. You can listen to them on YouTube and आप Talk Sport app download कर सकते हैं. और I think that app might be available in India. If it's not geolocked, if it's geolocked, तब आप VPN use कीजिए और VPN use करके आप सुन पाएं. Okay, so that's that for today. Thank you so much, gentlemen, for joining with me. Thank you so much, everyone, for putting your questions. And do let us know who do you think should lead India's bowling attack and who do you want to see as a wicketkeeper in the first test match against England. That's all. Thank you so much, everyone.
फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।